सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 कैन यू हियर मी? हेलो 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 हियर मी? हेलो भाई थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। चलो किसका खाली बॉक्स है? चलो बेटा आगे आओ। चलो आगे आ जाइए। आपका बॉक्स हो गया उधर खाली? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। अपना घर का दवा खाना है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। इधर किसका जगह है? ये रिलेशन ठीक नहीं है। चलो आगे आ जाइए, थोड़ा बेटे को आगे ले लो। चलो
कल आएंगे तो बोलेंगे बीच में
Hello. 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 Yeah, Mansi. Hello, sir. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Hello. The room is open, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes. So we are having Rahul. Who camera लगा के इसको back करो. So we are having today joint hybrid meeting. सब लोग शांति रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे. और
जो लोग यहाँ पर नहीं आए वो ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं। करीब 20-25 लोग ऑलरेडी ऑनलाइन में हैं। यहाँ पर टोटल काउंट कितना है आज का? 111, 77, टोटल 111। ठीक है। नेल्सन नंबर 111 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें 76 जो पेशेंट है और बाकी उनके केयर गिवर है। तो वो सब सपोर्ट ग्रुप भी है, क्योंकि आप भी सपोर्ट ग्रुप में, सदा जी सपोर्ट ग्रुप में है ना, और जोशी जी सपोर्ट ग्रुप में है। 112। तो सपोर्ट ग्रुप भी पर्सन विद एपिलेप्सी में साथ में होता है। तो हम लोग आज जो है पर्पल डे मना रहे हैं, और पर्पल डे का महत्व आप सब लोगों को मालूम है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ कार्यक्रम सुबह 10 बजे से चालू हो गया है, और 11 बजे कैसिडी ने यहाँ पर उपस्थित रही। रात को उनका 2:30 बजे का टाइम था, और उन्होंने कैसिडी ने यहाँ पर सबको संबोधित किया, और एक बड़ा ही अच्छा उन्होंने मैसेज दिया कि ये जो एक दिन है वो अवेयरनेस का दिन है, और सबने मिलकर एपिलेप्सी के ऊपर अवेयरनेस करना चाहिए। तो ये एक जो संदेश सबको मिला है, और कई लोगों ने जो कैसिडी को जानते हैं उन्होंने कैसिडी के साथ बातचीत भी किया। तो कुल मिलाकर सुबह 10 बजे से यहाँ पर प्रोग्राम चालू रहा है। कैसिडी के बाद में पेंटिंग कंपटीशन भी रहा, और जिन लोगों ने यहाँ पर आए हैं उन्होंने, काफी लोगों ने अच्छी खासी पेंटिंग की है, और मैं आपको उन लोगों की पेंटिंग बताना चाहूंगा। तो पेंटिंग को दिखाने के लिए मैं पीछे से पेंटिंग निकाल रहा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये नंबर 1, ये अफसाना की पेंटिंग। नंबर 2, जायबा की पेंटिंग। अनामिका की पेंटिंग ट्री इज अवर लाइफ, बहुत अच्छा संदेश दिया है, अवर बेस्ट फ्रेंड। आर्थिक की जिंगल। उम्मी की पेंटिंग। साहिल खान की क्रिसमस बेल। ये बिना ओपीडी के नेम की पेंटिंग। और ये गणपति बप्पा मोरिया केदार जादव की। मेरे को लगा कि ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी। मेरे हिसाब से देवाशीष भी इसमें एग्री करेगा। ये अंश ने बनाई। ये तरुनिशा ने बनाई। एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई, पर नाम नहीं लिखा इसमें भी। हो रहा। ये मेगा शेख ने बनाई। और ये पेंटिंग पूज चौधरी ने, पर्पल डे वर्ल्ड ओवर। ये पेंटिंग जानवी की है। और माई इंडिया शुभम ने बनाई। और ये एक सुंदर सा पेड़ बनाया है, सामने ने बनाया।
ये भी बहुत सुंदर बना है और ये काफी लेट बना है। सो ये लो, आप अपना माइक बंद रखेंगे और डिजिटल टीम मेरे को होस्ट बनाइए प्लीज, because I need to share my PPT. Please make me host. Please make Dr. Vengama also host. Good afternoon, Dr. Nimal Surya. Nice paintings. It was nice. Thank you, madam. Just to show you that how many people are active here. And Yeah. Very nice. now, so we have about 112 people in the Epilepsy Foundation office, madam. And Yeah. there are online, as you can see, about 30, 35. Plus, people are online on YouTube as well as other platforms. So there will be about 200 people from all over joining the program today. We had program, as I was saying, in the morning. So the painting was done and then followed by the music. And we had Om singing playing the music. He played on piano the 2 songs, which was wonderful. And then followed by the Eshu, who sung the song, couple of songs he sung. And then the Janvi twin, they dance on the Marathi song. And Dr. Vengama, we will be preparing for the August conference. Our team will be coming to the epilepsy conference, and we will certainly do the honor. So we will prepare and get ready for August conference for 1 hour show on one of the day. I will only request the organizer not to keep very late, because many of them are children and with epilepsy. So we ensure that they finish early and have dinner and sleep well, because they will be traveling for a long from Mumbai. Sure. Definitely. It's a very good idea. So we will be preparing for that. So we have Dr. Vengama, who is president of Indian Epilepsy Society, and she's here, and I'm sure Dr. Gagandeep Singh also would be here in some time. We'll message him. So we will start the program, and as I have got the permission to share my PPT, so will I share my PPT. I will be very brief. आप सब लोगों को तो मालूम है, और आज चूंकि पर्पल डे है और हमने अप्रैल 2020 के बाद में एपिलेप्सी की केयर की सर्विसेज कंटिन्यूअस चालू रखी। लॉकडाउन में भी एपिलेप्सी केयर का लॉकडाउन नहीं था, और जून के बाद में हमने सब लोगों को मेडिसिन सप्लाई भी चालू रखी। तो हमारा कंटिन्यूअस जो ओपीडी का सिस्टम रहा है वो रहा है, और ये जो है प्रोग्राम सुबह का हो गया। आप लोगों ने हाउजी खेला, हमको नहीं मालूम कौन जीते, बट जिसने विन किया उसको डेफिनेटली हम प्राइज देंगे। उसका नाम जरूर बता दीजिएगा, हाउजी के विनर का नाम बताइएगा। उसके बाद में सबको रिफ्रेशमेंट दिया गया, और दे ऑल आर रेडी नाउ विद सम रिफ्रेशमेंट। तो ये आज का प्रोग्राम है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू IB प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। आई होप दे कुड फाइंड द टाइम टू ज्वाइन इन। ये सारी एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें सब लोगों को मालूम है कि कौन से दिन क्या होता है। और ये लॉकडाउन में कंटिन्यूअस एक्टिविटीज रही थी, और जो टोटल अगर आप देखें, सब लोग शांति से सुनिए प्लीज, क्योंकि आप लोग अगर चिल्लाएंगे तो आवाज वहां पर बैकग्राउंड में जाएगी, मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल साइलेंस रखिए, ताकि जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन लोग हैं उनको आराम से सुनाई दे।
किसको कुछ प्रॉब्लम है तो उठ के बाहर जाके चिल्ला सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सबने अपना फोटोग्राफ वहां पर निकाला है ना। तो ये जो डेटा है, म्यूजिक सेशन जो हर सोमवार को होता है, उसमें 156 लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू रखा है। पहले जो है अहमदाबाद वाले हमारे ट्रेनिंग देते थे, और उसके बाद में मिस्टर जोशी, और उसके बाद में शिव राजौरिया और ज्योत्सना राजौरिया जो कि बॉलीवुड सिंगर है, और हमारी मूवी में भी जिन्होंने गाना गाया है, वो लोग अभी सिखाते हैं। 5 से 7 लोग जो हैं वो रेगुलर टच में हैं उनके। डैकुना यहाँ पर नहीं है कि है, जो 20 साल की लड़की है, उसने ऑनलाइन टीचिंग किया 5 से 7वीं क्लास के बच्चों का, और उसने 2 सब्जेक्ट के ऊपर रेगुलर क्लासेस ली, तो उसने करीब 35 बच्चों की क्लासेस ली। हमारी कंसल्टेशन इनिशियल जो थी वो ऑनलाइन थी, जो 1590 पेशेंट हमने ऑनलाइन देखे, और उसके बाद में जब अक्टूबर के बाद में जब ऑफलाइन भी चालू हो गया जॉइंट मीटिंग, तो हमने 1261 पेशेंट ऑफलाइन देखे। साइकोलॉजिकल काउंसिल 252 पेशेंट का ऑनलाइन हुआ है, और मैडम जो कि अभी हर मंगलवार को यहाँ पे आ रही है, तो 577 पेशेंट का ऑफलाइन भी हुआ है। क्राफ्ट क्लासेस जो पहले 2 महीने में 2 बार हो रही थी, अभी बंद हो गई है, अब यहाँ पर होने चालू हो गई है, तो वो करीब 230 लोगों ने अटेंड किया। ओम मेगा हमेशा अटेंड करते थे उसको। और स्पीच थेरापी जो मैडम अलीफिया है, उन्होंने 364 ऑनलाइन बच्चों की क्लास ली है। फिजियोथेरापी 337 और ऑक्यूपेशन थेरापी 554 ऑनलाइन का रहा है। और अभी जो मैडम शाम को आ रही है मंगलवार को, तो हमने पिछले 3 महीने से वो आ रही है, तो 103 पेशेंट का ऑफलाइन रहा है। और कॉग्निटिव थेरापी डॉक्टर मंगला जो है वो 1103 पेशेंट का ऑनलाइन हर फ्राइडे है। और डॉक्टर मंगला अभी फ्राइडे से महीने में एक बार फ्राइडे को यहाँ पर आएगी, तो मेगा ये उम्मी अंश आप सब लोग फ्राइडे को यहाँ पर आकर उनसे मिल सकेंगे। तो ये उन्होंने कल मैसेज दिया है, वो फ्राइडे को आएंगी ताकि आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग सुपरविजन में यहाँ पे हो सके। और योगा सेशन जो हर शनिवार को रेगुलर चालू है, और अब यहाँ पर भी चालू किया है मंगलवार को, जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, तो करीब 1114 लोगों का ऑनलाइन हुआ है, और 50 लोगों का पिछले 1 महीने में ऑफलाइन यहाँ पर हुआ है। और योगा डे पे 70 लोगों ने ज्वाइन किया। तो ये सारे काम जो है अपना कंटिन्यूस चालू रहा है। और कंसल्टेशन जो मंगलवार का है, ये जो है जोशी जी हैं, ये म्यूजिक थेरापी कर रहे हैं, और यशु है, ओम है, और श्रद्धा है, और इन लोगों ने गणपति आरती भी गाया। तो काफी तुम स्टार्ट करो। हाँ करो। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती। कुछ भी नहीं आ रहा है, तू मेरे पीछे पड़ा रहेगा तो कैसे आएगा। हम बात वो दे दूंगी मैं तेरे को थोड़ी देर में। तो इस तरीके से, और मंगलवार का ये ओपीडी रहा है, जो पहले ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चालू किया है। ये शुरुआत का टाइम है, लेकिन बाद में अभी हम यहाँ पे रेगुलर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काउंसलिंग है जो पहले ऑनलाइन होती थी, और अभी ऑफलाइन भी साथ में चालू हो गई है मैडम का। ये क्राफ्ट क्लासेस है जो ऑनलाइन रही है। मेगा यहाँ पे जिसने बनाया है, काफी अच्छा था, क्यों मेगा, है ना। और ये फिजियोथेरापी और ऑक्यूपेशन थेरापी की क्लासेस है हुई है।
और ये डॉक्टर मंगल हैं जो रेगुलर ऑनलाइन कॉग्निटिव थेरेपी की क्लासेस लेती हैं, और ये जो है योगा क्लासेस है जो हर सैटरडे की है। हमने इस दौरान कई सारे पेपर भी पब्लिश किए, और हमारा ये जो पेपर है कॉम्प्रिहेंसिव एपिलेप्सी केयर ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो कि हमने एक मॉडल जो क्रिएट कर दिया है एपिलेप्सी और उसके साथ डिसेबिलिटी को ध्यान में देते हुए, और ये हमारा मॉडल है जो कि हम ऑनलाइन किया है, जो कि हमारे मॉडल जो एपिलेप्सी केयर रूरल महाराष्ट्र का है उसको साथ में लेते हुए है। हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप लोगों को एसेस की है पेंडेमिक के टाइम में, और ये डेटा भी यहाँ पर जो जितने लोग हैं जिनका मैडम ने रेगुलर किया है, और उनका ये रिजल्ट भी हमारे पास सामने आया है कि सबको यही वरी था कि हमको फिट आ सकता है, और मेडिसिन कैसे लेंगे, तो ये दो जो चीजें हैं जो काफी चिंतित थी। हमने 5 कैंप इस दौरान में किए हैं, और ये एक पेपर जो है हमने जो एपिलेप्सी कैंप किया था उसके बारे में भी किया। ये सबसे पहला कैंप किया था हमने मार्च 2021 में, और इसमें हमने जो है कोविड टाइम में कैसे किया, जो कैबिन्स है वो 1, 2, 3, 4 और ईजी कैबिन बनाई गई, पेशेंट वेटिंग एरिया सेपरेट था, और मेडिसिन रूम सेपरेट थे, और एग्जिट और एंट्री में काफी सेपरेट था, ओटीपीटी, एसटी और काउंसलिंग का रूम सेटर था, पेशेंट का वेटिंग रूम अलग था, और हर पेशेंट का रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद में अगर वो पॉजिटिव है तो उनको एंट्री नहीं थी, अगर वो नेगेटिव है तो उनको हमने एंट्री दिया था। तो ये एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल हमने क्रिएट किया। हमने अमेरिकन एपिलेप्सी सोसाइटी में भी ये पेपर प्रेजेंट किया, जो कि ये था आउटकम ऑफ एपिलेप्सी इन द हेल्थ वर्कर इन इंडिया, जो हमने आशा वर्कर्स का जो ट्रेनिंग सेशन लिया था ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तो उसको हमने आशा वर्कर्स का क्वेश्चनर जो किया था उसके बारे में ये अमेरिकन एपिलेप्सी सोसाइटी में हमारा पेपर एक्सेप्ट हुआ था और दिसंबर में प्रेजेंट किया था। हमने इसी दौरान एपिलेप्सी के पेशेंट का जो दवाई का इश्यू था उसको हमने सॉल्व करने के लिए एक स्कीम निकाला, और हमने कई सारे पेशेंट लोगों को जो है अडॉप्ट किया, और उनको जो है दवा जो है उनके घर में हमने भिजवाई। ये कुछ पेशेंट है, 250 के ऊपर मरीजों को हमने दवाएं मुफ्त में महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र के जिलों में हमने दिया था। नमस्कार, माझं नाव संबोधी मिलिंद वाडके आहे। मी चित्रकूटला राहतो। मला जवळपास 7 वर्षांपासून एपिलेप्सी अर्थात आघाडीचा त्रास आहे। त्रास असल्यामुळे मला खूप समस्यांचा सामना करावा लागतोय। या आघाडीमध्ये दिनांक 23 जून 2020 तारखेला डॉक्टर निर्मल सूर्या यांच्याशी मी अपॉइंटमेंट घेतली व त्यांनी मला अपॉइंटमेंट मध्ये सहभागी घेतला। सहभागी केल्यावर त्यांनी मला 2 दिवसातच अर्थात 25 तारखेला त्यांनी 48 तासाच्या आत त्यांनी मला गोळ्या पाठवल्या। आपण बघू शकता गोळ्या, मेडिसिन्स पाठवल्या आपण बघू शकता। ऑक्सिटॉल 900 आणि ऑक्सिटॉल 900 आणि एपिलेट्रा व याबद्दल डॉक्टर निर्मल सूर्या व त्यांचं पूर्ण एपिलेप्सी फाउंडेशन मुंबई यांच्याबद्दल मी आभार मानतो। धन्यवाद। तो ये चंद्रपुर में हमने पेशेंट को दवा दिया था, और हमने ये ऑनलाइन जो है मैराथन का जो यूनाइटेड वे ऑफ मुंबई का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से करीब 10 लाख रुपए रेज किए ताकि लोगों को दवा। ये कुल मिला के कई सारे लोगों को जिनको घर घर तक हमने दवा पहुंचाई है उनकी तस्वीरें हैं और उनके टेस्टिमोनियल है। पूरे महाराष्ट्र में हमने दवा भिजवाई है, और इस दौरान हमने
आशा भवन जो कि एक संस्था है, उनको हमने एडॉप्ट किया है और उनके यहाँ पर हम रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। और ये अभी लास्ट मंगलवार का फॉलोअप है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन हमने पूरा बच्चों का फॉलोअप किया है। सारे बच्चों का डेटा है हमारे पास। वहाँ की नर्स के साथ हम कंटिन्यूस बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि टोटल वहां पर 29 बच्चे थे जब अगस्त में। अब हमारे पास 17 पेशेंट जो है रेगुलर फॉलोअप में है और इन 17 में से 15 बच्चों को एक भी फिट नहीं आया है जब से वो हमारे ट्रीटमेंट में है। और 2 बच्चों का फिट जो है, पहले जो हमारे सप्ते में 10-12 आते थे उससे कम होकर सप्ते में 1 या 2 हो गए। तो हम उनको रेगुलर मेडिसिन भेज रहे हैं पिछले 1.5 साल से। और यहाँ से अब बाकायदा पार्सल जाती है और उनको दवाएं और फॉलोअप है। तो ये एक इनिशिएशन हमने पिछले 1.5 साल से चालू किया है और हम रेगुलर लास्ट फॉलोअप उनका पिछले मंगलवार को ही हुआ है। ये वीडियो लास्ट मंगलवार के। और इस दौरान हमने 5 कैंप किए हैं, अलीबाग, शाहपुर, जवार, इगतपुरी और पुणे। पुणे का कैंप नवंबर में हुआ। हमारे दूसरे कैंप 2 मार्च में होने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में काफी बढ़ गया था, तो हमने फरवरी और मार्च के कैंप कैंसिल किए हैं। अब हम मई से वापस चालू करेंगे। तो अभी तक हमने इन 5 कैंप में 578 मरीज देखे, 151 ईईजी किए, 90 लोगों का काउंसलिंग हुआ, 73 लोगों का थेरेपी हुआ, 121 लोगों का ऑक्यूपेशन थेरेपी हुआ, 89 लोगों का स्पीच थेरेपी हुआ। और इन 5 जगहों में जहां जहां 3 जगह सीटी या एमआरआई थे, तो 32 लोगों का सीटी स्कैन या एमआरआई हुआ। और ये 395 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। बाकी लोगों को या तो डबल वैक्सीन था या बच्चे थे जिनका की टेस्टिंग नहीं हुआ। तो ये एक पूरा हमने सेशन किया हुआ है कैंप का। और ये शाहपुर का है और ये भिन्न भिन्न कैंप्स के हैं। ईजी मशीन आप देख सकते हैं, पूरा डिस्टेंस, कोई भी भीड़ नहीं और पूरा प्रोटोकॉल। और यहाँ पर मेडिसिन हर मरीज को 3 महीने का दवा फ्री दिया गया है। नेशनल एपिलेप्सी डे पे हमने प्रोग्राम किया था, काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ पूरे वीक का। और अब जो है आज पूरे देश में प्रोग्राम होने वाले हैं। थोड़ी देर में मेरे को एक और प्रोग्राम जो बेंगलोर से लाइव होगा उसको संबोधित करना है। और डॉक्टर संजय सिंह जो कि अमेरिका से हैं और यहाँ पर भी 2 महीने पहले आए थे, उनको हमने करीब 10-12 डिफिकल्ट पेशेंट दिखाए थे जिनका ओपिनियन लिया था। तो डॉक्टर संजय सिंह चेयरमैन है क्रेक्टन यूनिवर्सिटी एपिलेप्सी सेंटर के। उनका आज 3 बजे एक टॉक शो लाइव होने वाला है। और शाम को 6:30 बजे जो है अवेयरनेस पर्पल डे प्रोग्राम एपिलेप्सी का इंडियन एकेडमी का वो होने वाला है और मैं उसको मॉडरेट करने वाला हूँ। एपिलेप्सी रनर ग्रुप ने पर्पल डे के ओकेजन में 1000 किलोमीटर चलने का फैसला किया है। तो हमारा जो रनर ग्रुप में 137 न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो हर रोज दौड़ते हैं, जिसमें मैं एक हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा आज का रनर सुबह का 7.37 किलोमीटर 1 घंटा 1 मिनट का है, जो मैं आज सुबह का मेरा वॉक है। ये हम लोग रेगुलर करते हैं और हम कल 1000 किलोमीटर पूरा करके सबको बताने वाले हैं कि ये होगा। ये एक अवार्ड है जो आप लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 25,000 न्यूरोलॉजिस्ट मेंबर हैं, उन्होंने केनेथ एम विस्टे जूनियर एमडी पेशेंट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का है, वो इस साल का डॉक्टर निर्मल सूर्या को एपिलेप्सी फाउंडेशन इंडिया पहला इंडियन हूँ जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। मेरे कई दोस्तों ने बोला कि ये
रूप गुरसानी ने मैसेज दिया कि ये इंटरनेशनल पद्म अवार्ड है। एक और मित्र ने, लक्ष्मी ने फोन करके बोला कि इट इज इक्वलेंट टू नोबेल प्राइज। आई डोंट थिंक ये सब। व्हाई आई गॉट दिस? डॉक्टर केनेथ एम बिस्टे जूनियर एमडी पेशेंट पीसी अवार्ड recognizes one neurologist who exemplifies Dr. Viste's leadership and commitment to advocating for the patient community. And Dr. Nirmal Surya dedicated his career to epilepsy patients in India, offering free weekly clinics and epilepsy camps to below the poverty line across the country. Dr. Surya also founded the Epilepsy Foundation of India, is an active advocate for patients at the state and national government. तो आप लोग इससे तो एग्री करेंगे, क्योंकि आज भी आप पेशेंट एडवोकेसी के प्रोग्राम में यहाँ पर हैं, और ये पॉसिबल है क्योंकि आप लोग रेगुलर फॉलो करते हैं। आप लोगों में से कई लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो फॉलो करते हैं, और इसकी वजह से वो ठीक है। अगर मैं आज सब लोगों से पूछूं कि आप में से यहाँ आने के बाद कितने लोग अच्छे हैं, तो आप जरा अगर अच्छे हैं तो हाथ खड़े करके बताइए। So almost everybody has raised the hand. Thank you very much. जो अच्छे नहीं है वो हाथ खड़े कर दे। Thank you. So I honestly ये अवार्ड मेरे को 5 तारीख को मिलने वाला है अमेरिका में। अगले बुधवार को मैं सिएटल के लिए जाऊंगा, और 17 तारीख तक यहाँ पर नहीं हूँ। डॉक्टर मेहुल आपको फॉलो अप करेंगे, पहले से ही बता देता हूँ। पर लेकिन आप रेगुलर आइए, दवाएं भी मिलेगी और बाकी सब लोग रहेंगे। थैंक यू। तो विद दैट नोट आई थैंक एवरीबॉडी। तो हम लोगों का जर्नी जो है वो काफी अच्छा है, और ऊपर वाले ने रिकॉग्निशन भी काफी दे दिया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है, और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर रिकॉग्निशन मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। हमारे यहाँ से गोल्डन लाइट अवार्ड मिला है दिव्या को लास्ट ईयर टोक्यो में। दर्शना का जो पेंटिंग है वो बेस्ट पेंटिंग रिकॉग्नाइज हुआ है, जो उन्होंने पिकअप कराया है। तो आप लोगों का एफर्ट जो है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। आप लोग जो भी करेंगे, हम अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको जरूर हम आगे बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप में टैलेंट है तो हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं पे पीछे ना छूटे इतना हम ध्यान रखना चाहते हैं। तो आप लोगों में से जो मेहनत करेगा उसको जरूर अच्छा फल मिलेगा। अपनी मेहनत जारी रखिए, और जिस चीज में आप अच्छे हैं उसको बढ़ाते रहिए। ये मत सोचिए कि मैं एक बीमार हूँ, मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप जो कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो नहीं कर सकते उसको ऊपर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि हमेशा ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, ये मत सोचो कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका नेगेटिव थॉट रहेगा तो आप उसी में उलझे रहेंगे। इसलिए उसको ना सोचते हुए आप जो चीज कर रहे हैं उसको और बड़ा करिए। अगर आज आप 1% कर रहे हैं तो उसको 10 करिए, 20 करने की कोशिश करिए, 40 करने की कोशिश कीजिए। अपना समय और ध्यान उस पर लगाइए, ना कि जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें। ये आज आपके लिए एक बड़ा मैसेज है, और मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफी पॉजिटिव वाइब होगी और आगे बढ़ने की और हिम्मत मिलेगी। धन्यवाद। मैं अब चाहूंगा कि डॉक्टर वेंगम्मा जो यहाँ पर है, डॉक्टर वेंगम्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम में लीड लें और अपना जो मैसेज है और प्रेजेंटेशन है आप सब लोगों के लिए उसको बताएं। डॉक्टर वेंगम्मा जो है प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया, इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन की। और डॉक्टर वेंगम्मा प्रोफेसर एंड हेड है, और इस जगह पे है जहाँ पे हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद चाहिए। कहाँ से? तिरुपति बालाजी। तो वेंगम्मा तिरुपति मेडिकल कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी की है। और वेलकम डॉक्टर वेंगम्मा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट।
Yes, Dr. Vangama, whenever you are ready. Shall I start sharing? Yes, madam. Good morning to, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Please, ma'am, proceed on slideshow mode. So, It's okay? yes. It's okay. Good morning to everybody. And I, at the outset, I really thank Dr. Nima Surya for giving me this opportunity. I'm very happy to see all the achievements, and I want to express the congratulations to Epilepsy Foundation of India, and especially to for Nimal Surya for getting all the awards from American Epilepsy Society, and their members also got awards from International Bureau of Epilepsy. And I express my wishes on the Purple Day for all the patients with epilepsy who are on online and offline. I was just asked to speak on issues with the children, very brief presentation. As all of you know that there are about 50 to 60 million people worldwide have epilepsy, and nearly 80% of these people live in low and middle income countries. And an estimated in India is about 12 millions. Among these, the children, rural it is little more, 7 per thousand. In urban, it is about 5.48 per thousand. Active epilepsy is about 1,000, 4.7 per thousand. But almost 60% of the people, epilepsy starts in childhood. It is the commonest neurological disorder. Epilepsy in children is different from adult. Basically because there are some syndromes, age-related expression of specific syndromes. Here, the correct diagnosis is definitely important because of specific diagnosis, evaluation and treatment is recorded. Important because of the proper management and the prognosis. The accurate diagnosis is critical because it guides for further testing like EEG and imaging, and also helps for a treatment recommendation because there are specific drugs useful for certain epilepsy syndromes, and it will help on the prognostic information. Basically, for a patient with epilepsy, first and foremost is always better to have an established diagnosis of epilepsy and exclude all the seizure mimics. There are many conditions in children which can mimic epilepsy, sometimes make a wrong diagnosis and unnecessary treatment. Next, having made a diagnosis of seizure, epilepsy, you should check what syndrome it fits in, or we have to do a test to look for any structural region. And the choice of drugs depends on the seizure syndrome, and subsequently there will be dosage and compliance from the patient point is more important for definitive improvement. Like how you make a diagnosis of epilepsy, that is most important step in the management of epilepsy, especially in children. Like as I mentioned, is it an epilepsy? Is it seizure or a seizure mimic? If it is a seizure, then you have to check, is it a provoked or unprovoked? Provoked means secondary to any of those fever or anything you can get febrile seizures, or it could be because of low sugar, low
sodium in the body, that is hypoglycemia, hyponatremia, those things can be called as a provoked. Unprovoked means without any underlying cause or precipitating cause. Why? Once it is an unprovoked, if it is a single seizure, you may not start a treatment, because here we have to again weigh the pros and cons of recurrence of seizure versus side effects of the drugs. But when there are more than 2 episodes of a seizure, you label it as a epilepsy. Having made the diagnosis of epilepsy, you should again say what type of epilepsy. Is it a focal or is it a generalized? Again, based on that, you decide about your investigation and further approach. And again, syndromic, is it an idiopathic or it is a symptomatic? Like I mentioned, there are many conditions in children which can mimic what we have seen in our practice. Almost 10 to 25% there is a wrong diagnosis. Like in children, jitteriness can be wrongly labeled as a epilepsy, and similarly benign sleep myoclonus. And in infancy, that is between 1 month to 1 year. In neonate means after birth to 1 month. Infancy, 1 month to 1 year, you have to check. Most important thing is a breath holding spells. That is for child, for something he will ask, if the parents won't give, he'll start crying and holds the breath. And then he become blue over the tongue and the hands, or he can become a pale. And he may become unconscious for a few seconds or few minutes. That is not a seizure. It's a breath holding spells that we have told. Most of the time, that is the commonest seizure mimic, which is wrongly diagnosed as epilepsy. Other important, there are many typical presentations which can mimic seizure, like vomiting or a daydreaming, which can sometimes be mistaken for absent seizures. Then panic attacks, and especially in the girls of an adolescent, psychogenic non-epileptic spells, or in the school-going boys or girls, you may get a psychogenic seizures, which are because of stress and other things. Stress at home or stress at school can cause seizure. That's why before you label any child with the epilepsy, doctor has to know about, exclude all these conditions. How you diagnose epilepsy? I think mostly because they get very infrequent attacks. Doctor may not get chance to see that, but mostly we take history from the patient, here in a child from the parents, or an onlooker eyewitness. Most important, we ask in the details, and we see how, or we ask the eyewitness or whoever has seen the episode to imitate those episodes or moments. Other now great advantage with the mobile is video recording. Once having seen those episodes in the video, the doctor will decide, is it definitely a seizure or a seizure mimic? Based on that, we can definitely make it. Most important, children more than 3 years, if you take detailed history, the children will definitely tell about their symptoms, and it's easy to diagnose. What all the fits can have, when there is something called prodrome for a few hours a day, and then the seizure itself has got something called aura, ictus, post-ictal state. Aura is the first phase where a small seizure episode, which patient will remember, that is smell, some peculiar taste or smell. Before they become unconscious, for a few seconds they have some of these symptoms, depending upon which part of the brain this seizure is arising. Then actual seizure or ictus, lots often followed by aura. Then the post-ictal, after these movements have stopped, patient will be confused, or they may go into sleep or complaint of headache. That's why all the parents should always remember about, in getting looking at all these events, and when the doctor asks, they should tell about
prodrome, what happens before the episode, just before 1 or 2 minutes, or what happens, then ictus, then the post-ictal status. Usually it is important if it focal means it starts in one side of the body, it's definitely useful for the doctor because it can be because of underlying brain lesion. If it is a generalized, most of the time it is a hereditary investigation like MRI, may be normal, may not be required. Again, your drugs will depend upon the type of the attack where it's. That's why the history and video recording is the most important for the diagnosis and the management. If it is generalized seizures, the drugs are sodium valproate, levetiracetam, like that. If there are partial seizures starting on one side of the body, or there is some peculiar smell or visual symptom, the drugs could be carbamazepine. That's why your history is more important, and the doctor has to identify a specific electroclinical syndrome, which is definitely useful for the diagnosis, treatment response, and as well as to assess the risk of injury and ASCO. Counsel recording, most important is psychosocial comorbidities. Again, to re-emphasize, early diagnosis is crucial. I think what you see in the even epilepsy foundation team, that early diagnosis can definitely treat it, reduce the risk of recurrence, better prognosis, optimizing the treatment to ensure good quality of life in a child, their parents, and their legal guardians. Because establishing a diagnosis of epilepsy in early childhood has a profound impact on the child's psychological and physical development. Because especially the most important is on the parents. It's very difficult to accept the diagnosis suddenly. How can it happen to my child suddenly? It really creates a lot of fear and uncertainty in the parents' mind. That will again impact a lot of psychological development. Most important test for this is neuroimaging, and EEG is helpful. We should know to know the cause for the epilepsy. There could be genetic causes. Metabolic means any change in the blood, that is sugars and sodium and electrolytes. And then immune or infectious causes are known. Neuroimaging and EEG is another. These two tests, like neuroimaging means imaging tests like CT scan or MRI. EEG are the two things which will definitely help you to know the cause for the epilepsy and to know where it is arised and what type of epilepsy. It will definitely give you clue. The treatment options are 4. One is a medication. Medication we have to use according to the type of epilepsy. If not controlled, then you label it as a difficult to treat epilepsy. Then there are other options in children compared to others. There is something called ketogenic diet, vagus nerve stimulation, and surgery. Children with epilepsy are more likely to have a lot of comorbid. Most important, they have intellectual disability, depression, anxiety, attention deficit hyperactive disorder, and poor bone health compared to the peers because of the maybe the drugs. That's why whenever any child with epilepsy comes, in addition to the epilepsy, we should always elicit the history related to depression, anxiety, and attention deficit hyperactivity disorder. Sudden unexpected death in epilepsy, that is SUDEP, is on one of the rare complications of epilepsy. See, one child out of 4,000 person years. That's why all families of children with epilepsy should be counseled regarding this complication, especially those with frequent nocturnal convulsions, to avoid or to clear up their fears. The impact of epilepsy on a child and family is multifold with a lot of, in addition to medical, they have a psychological, educational, personal, economic, and social ramifications. That impact depends upon the severity of epilepsy, and they have family, environment, perception of this epilepsy by the child, parents, family, and society. And then the stigma attached to this all of epilepsy has got a lot of
impact on the child's quality of life, and the level of health care, social support which is available in that setting. All these things will have a definite impact on the psychological needs of the baby child or educational, economic, and social ramification. Most important comorbidity in the school children we see is attention deficit hyperactive disorders, learning disabilities, depression and anxiety that impede the developmental progress and affect the emotional health. Hence, it is possible better to counsel the teachers who are dealing with these children regarding all these issues of learning disabilities and ADHD. Sometimes because scholastic performance is definitely affected by the illness, by the epilepsy, as well as by the drugs which they use. That's why when we choose the drugs for epilepsy in children, always we have to weigh pros and cons of recurrence of epilepsy with the risk versus side effects of the epilepsy drugs, basically on memory, cognition, other things. The cognition, memory, attention, executive, language, that is speech, are known to be affected either because of the disease or because of the adverse effect of AD. Most important issues children is what we feel as this one: monitoring seizure frequency, severity, screening for adverse events is inadequate for evaluation of overall health or a holistic health. And quality of life in children with epilepsy is again what age they had seizures, what type of seizures, what is the frequency of seizure, what is the severity of the seizures, and what is most important is parental anxiety and other comorbidities like learning disabilities as well as ADHD. All these things will definitely affect the quality of life. The social stigma, prejudice associated with epilepsy and poor awareness of the disease, most important is poor awareness of the disease, can definitely impact the development of child at this vulnerable age and affects the overall health. Basically, like epilepsy and use of multiple drugs and longer duration has got a definite impact on the child's quality of life. Most important is the scholastic performance. Most of the parents are worried about the control of seizures and scholastic performance compared to other issues. But the quality of life is definitely compromised by multiple drugs. And if they are not taken drugs properly because of multiple drugs and multiple times, there will be recurrence of seizures. And then there may be side effects of the drugs. All these things will definitely have a impact on the quality of life. That's why in epilepsy related to psychiatric, behavioral and cognitive comorbidities with the consequent long-term negative effects. To say that the child's epilepsy can pose a heavy burden for the family, with the main family concern usually related to seizure control, school performance, side effects of the medication. And many parents feel that they need more information on the child's health. This way, I think we should congratulate Dr. Nimal Surya for taking the holistic or comprehensive care of epilepsy control, in addition to the providing the free drugs, free consultations, looking after all the psychosocial aspects of the epilepsy in the form of yoga therapy, music therapy, and speech therapy, cognitive. I think he's doing a wonderful service to the patients with the epilepsy. I think to say thank you. And the Purple Day, I think everybody knows, people everywhere are understanding the reality for people living with the epilepsy. The same will be definitely applicable for all children with epilepsy. Thank you, Dr. Surya, for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Vengamam. और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से
बताया, एपिलेप्सी के कारण बताए, एपिलेप्सी की कोमॉर्बिडिटीज बताई, बच्चों में बताया और दवाई के बारे में बताया और लास्ट में पर्पल का मीनिंग भी एक अच्छी तरीके से समझा दिया कि ये पर्पल जो कलर है, कलर सब जगह एक ही है। उसी तरह एपिलेप्सी पूरे विश्व में एक ही है और उसकी दिक्कतें जो है वो भी एक जैसी ही है और उनको एक साथ मिलके कमी किया जा सकता है। आपने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, थैंक यू वेरी मच। किसी को मैडम के लिए कोई सवाल है? हाँ बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया। हाँ तो मैडम मेरा एक ही सवाल आपसे था कि जैसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बाहर, जो मैं भी अमेरिकन एपिलेप्सी सोसाइटी की मीटिंग में गया था अमेरिका शिकागो, तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट ग्रुप है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर केयर गिवर की ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेशन करते हैं। इंडिया में बेंगलोर में शायद कुछ सालों पहले डॉक्टर HVS ने चालू किया था, तो क्या हम वो सर्टिफिकेशन वापस चालू कर सकते हैं या आपके हिसाब से कोई है जहाँ पर जो लोग इंटरेस्टेड हो, जिनके पास कोई कार्य न हो, वो कम से कम एक ट्रेनिंग लेकर सोशल सर्विस तो कर सके? Definitely, sir. I think with the Rehabilitation Council of India, through that open this one for certificate course for epilepsy is being definitely was organized for many. I think more than 40 people got trained. For some reason it was stopped. I think we'll definitely reintroduce that because already all the modules were prepared and for them they had about 1 month training. It is mainly meant for medical and of course non-medical and who are willing to help all the patients with epilepsy. I think we'll definitely restart that. That's a good program which was done under Bangalore University. I think we can extend this facility across the country to all the states so that everybody can have, and using that same template of model anyhow it is there. I think everybody can translate into their own languages and then you can many people can be benefited because that modules are very good, starting from epidemiology to the treatment, what a non-medical person should know, especially those dealing with this one. It's quite useful program, but for some reason it didn't take it up in an aggressive way. I think we should really take an initiative to continue, sir. Thank you for this one. I will be happy to take Epilepsy Foundation India as one of the center, and I'm sure I can train more than 10 people here for very effectively. If you feel we can take it all over India, I think I would be happy to take it in. I've got a place. Only thing somebody has to give a degree. That's why it was attached to Bangalore University. Maybe we have to think of those logistics or Indira Gandhi Open University. You can have some tie-up. I think you can definitely go ahead, sir. Having made the training, we need some certification. That's the only thing. That why it was tie up with the Bangalore University and rehabilitation. I'll just talk to look at it, and I will be happy to do any assistance. Definitely, sir. Sure, तो sure, आप लोगों ने definitely. सुना कि हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया क्योंकि वो प्रेसिडेंट है कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जो आप में से कुछ लोग हैं जिनको मर्सी है, she can take a certification course and help the people. तो उसका एक साल का कुछ ट्रेनिंग होता है या कुछ 1 महीने का होता है, वो सर्टिफिकेट करके आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप एक सोशल सर्विस एपिलेप्सी सेक्टर में कर सकते हैं। तो वो हम चालू करने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर कि इससे कुछ लोगों को और एम्प्लॉयमेंट भी मिलने का रहता है, जो जिनके पास जॉब नहीं है या जो इंटरेस्टेड है। थैंक यू वेरी मच मैडम। आई विल वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बार परेशान करते रहेंगे, जहां पे भी एपिलेप्सी का कार्य होगा आपको हम जरूर बुलाएंगे। टेक इट फॉरवर्ड एंड वी हैव डॉक्टर संगीता रावत, हु इज द प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी KEM,
Sangeeta Rawat is also now the Dean of Medical College KEM, and may I request Professor Sangeeta Rawat to welcome first of all on the Purple Day program, Sangeeta, and thank you very much for being here. Professor Rawat जो है Indian Academy of Neurology की epilepsy subsection की chair भी हैं, और हमारे लिए तो she is a very close friend, always available to us. कैंप में भी आई हैं कई बार, अपने असिस्टेंट लोगों को भी भेजती है. तो थैंक यू संगीता फॉर बीइंग हियर ऑन पर्पल डे. मे आई रिक्वेस्ट यू टू गिव सम एड्रेस ऑन एपिलेप्सी एंड मैरिज. आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह ही हमारी एक लड़की जो आई थी जिसकी एंगेजमेंट हुई और उसकी 28 तारीख को शादी है. तो क्या नाम था उसका? सरिता चिल्के. किधर है? आइए आप इधर, मिठाई लेके आइए आप. आइए आइए इधर आइए. So the mother is here. She is so happy because her daughter is getting married. आइए इधर आइए. आपसे डॉक्टर संगीता जरूर कुछ पूछना चाहेगी. बताइए कैसे क्या है आपकी बच्ची का? बच्चे का बहुत 11 साल से लड़की को आगे नहीं आता है. अभी लड़की डॉक्टर के पास आए ना, निर्मल से अभी लड़की अच्छी हो गए. लड़की दवा अच्छा खाता है. अभी शादी को फिक्स हो गए. अगला महीने में 24 तारीख को शादी है. सब लोग को आ जाओ डॉक्टर. अपने लड़के वालों को बताया है मिर्गी के बारे में? अपने लड़के वालों को मिर्गी के बारे में बताया है? उनको बताया है ना आपने कि ठीक हो गया? हाँ ठीक है, बताया. उसको बताया. अब लड़की नहीं, ऐसा नहीं आता तुम लोग को. हम लड़की को पसंद करो, नहीं तो डॉक्टर का पास तुमको लेके जाए. नहीं हम लोग को पूछा, अच्छा तुम्हारा लड़की हमको शादी करेगा. बोला अभी अगले महीने में 24 तारीख वो बहुत सही अप्रोच लिया है आपने, बहुत सही अप्रोच लिया है. Thank you very much, Dr. Surya, for inviting me for this Purple Day program. And I think it's always a pleasure how you gather the patients for this day, and we have all the functions for celebrating this Purple Day. So ये शादी और मुर्गी के बारे में मैं अपने कुछ ख्यालात बताऊंगी आपको. वो जरूरी, वो हमेशा आप लोगों को प्रॉब्लम है कि जब लड़की को मिर्गी होती है तो उसकी शादी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है. लड़कों को मिर्गी होती है तो उनकी शादी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए. पहली बात तो अगर लड़की या लड़के को जो आपको बचपन से लगे कि कुछ मिर्गी है या फिर एडल्टहुड में मिर्गी है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से कैपेबल बनाओ, जिसकी वजह से वो अपने दवाई का खर्चा खुद कर सके. और अगर एक बार वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर आगे जाके वो कुछ करियर बना सकते हैं. दूसरी बात, उनको आप पहले से दो कि अगर आपको लगे कि कुछ आपको कोई अपने आप पसंद आए, जैसे जिसको बोलते हैं अपनी पसंद से शादी करना, लव मैरिज बोलते हैं, तो उसके लिए आप मना मत करो, क्योंकि ये एपिलेप्सी के साथ अरेंज मैरिज करने में तकलीफ जरूर होती है. क्योंकि जैसे आप अभी लड़का हाँ बोल दे तो भी उनके इन लॉज वगैरह हाँ नहीं बोलते, नहीं बहू को मिर्गी है, जमाई को मिर्गी है, तो कैसे करेंगे. तो अगर आप उनको पहले से परमिशन दो कि अगर आप जब पढ़ते हो, कर रहे हो स्कूल में, आई मीन कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आगे नौकरी करते हो, उसमें अगर आपको कोई मिले जिसको आप पसंद करते हो, आपकी मिर्गी जानने के बाद भी आपको एक्सेप्ट करते हो, मिर्गी जानने के बाद भी, तो ऐसे लोगों से शादी करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. क्योंकि वो इट इज डन इन अ गुड फेथ and with a full trust, and that person knows that I am going to support the opposite person. जो दूसरे साथ है मेरे साथ, उनको उनकी मिर्गी का मैं ख्याल रखूंगा, उनकी दवाई को टाइम पे देने का मैं ख्याल रखूंगा. तो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी हो जाती है. तो ऐसे आप उनको प्रोत्साहन करो कि आप अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सके. सपोजिंग ऐसा नहीं हुआ और आपको अरेंज मैरिज करना है, तो अरेंज मैरिज में मेहरबानी करके छुपाइए मत. मुझे मालूम है आप जैसे मिर्गी के बारे में बताएंगे तो तुरंत पहले ही ना बोल देंगे, तो आप पहले मत बताओ. इस माया मीडिया एक हो सकता है कि पहले आप मिलो,
पहली मीटिंग में बताने की जरूरत नहीं है कि उसको मिर्गी है। एक दूसरे को मिलने दो, बात करने दो। उसके बाद जब लड़का लड़की एक बार मिल लेते हैं तो भी दूसरी मीटिंग में आप फिर बता सकते हो कि नहीं भैया, हमारी लड़की या लड़का अच्छे हैं, मगर एक दूसरे को पसंद करते कि मगर उनको फिट है। तो पहले वो जो लड़का है उस या लड़की, उसको आप पहले बताने दो, उसके बाद पेरेंट्स से बताओ। सो दैट में अगर उनको एक दूसरे पसंद आ गए तो मिर्गी के बावजूद भी वो एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट में बी इजी मीडिया रादर देन छुपाने का, नहीं मुझे कुछ नहीं है, कभी कभार कुछ चक्कर आता था, अभी कुछ नहीं है, फिर आप दवाई छुप छुप के लेना, वो सबसे आगे जाके प्रॉब्लम होते ही है। फिर वो दवाई बंद कर देते हैं क्योंकि शादी हो गई, दवाई ठीक से मिल नहीं पा रही, मम्मी के घर से दवाई आई नहीं है, तो फिर फिट आ जाती है। और एक बार फिट आ जाती है तो सब मालूम पड़ जाता है कि चलो भाई, उसको तो मिर्गी की बीमारी है, हमको बताया नहीं, हमसे छुपाया है, तो फिर वो जाके डिवोर्स फाइल करते हैं। तो वो हमको नहीं करना है। तो इसीलिए थोड़ा धीरज रखिए। देयर आर एपिलेप्सी मैरिज ब्यूरोज है, जैसे कि पूना में एक है, वो चल रहा है। प्लस यहाँ के आप एपिलेप्सी सम्मान ग्रुप, जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, जैसे डॉक्टर सूर्या का एपिलेप्सी फाउंडेशन ग्रुप है, अगर वो सब में आप ज्वाइन करोगे तो आपको कहीं ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिससे आप शादी के बारे में सोच सकते हो। तो सोशल मीडिया पे भी आप ट्राई कर सकते हो, बट छुपा के करना वो गलत बात है। दूसरा तीसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मिर्गी है तो मेरे बच्चों को होगी, इसीलिए शादी नहीं करना। वो बहुत गलत है। आनुवांशिक बहुत कम लोगों को है, 5% 10% लोगों को आनुवांशिक बीमारी मिर्गी होती है। तो उन्हीं लोगों में कुछ चांस रहता है बच्चों को होने के, मगर बाकी लोगों को ऐसा चांस नहीं होता है। तो आप जब लड़के ढूंढ रहे हो तो आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट है उससे अच्छे से समझ लो कि आपकी मिर्गी आनुवांशिक वाली है या नहीं आनुवांशिक वाली है। तो आप क्लियरली कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो कि नहीं, मुझे ये आनुवांशिक नहीं है, तो मेरे बच्चे को होने की संभावना नहीं है। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर आनुवांशिक है तो भी टक्का कम रहता है, तो फिर भी ऐसा आप शादी के लिए कर सकते हो। तीसरी बात ऐसे होती है कि जब आप दवाई ले रहे हो तो आपको लगता है अगर मैं ये दवाई फिट कर लूंगी तो मेरा बच्चे को, जब मैं गरोदर होगी तो बच्चे पे इतना असर होगा कि मेरा बच्चा अबनॉर्मल होगा। वो गलत है, क्योंकि वो अगर हम प्लान से प्रेगनेंसी करें तो हम सही सेफ दवाई पे उनको शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार हम उनको सही सेफ दवाई पे शिफ्ट करेंगे तो वो उसके बाद नॉर्मल 95 to 97% प्रेगनेंसी नॉर्मल हो सकती है। 5% चांस है कि अबनॉर्मलिटी हो सके, मगर वो हम रेगुलरली सोनोग्राफी वगैरह करके आगे से पता कर सकते हैं। तो वो जरूरी है कि आप वो बताओ कि नहीं, दवाई चालू रहने के बावजूद भी वो गरोदर हो सकती है और बच्चा नॉर्मल हो सकता है। और शायद आपको गरोदर होने के बाद बिल्कुल दवाई बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर बड़ी फिट आ गई और बच्चा आप गरोदर है तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। सो ये सब बात समझना आगे से जरूरी है। उसके बाद फिर आप शादी के लिए आगे बढ़ो। और शादी पे आप जब भी प्लान कर रहे हो तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके पहले से प्लीज बताइए कि अब हम लड़का ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हम न्यूरोलॉजिस्ट को 3-6 महीना मिलता है जब वो सेफ ड्रग पे आपको शिफ्ट कर सके, जो बच्चे को हार्म नहीं कर सकती। तो प्लान्ड वेडिंग करिए। फिर ऐसा भी है, हमारे पास बहुत से ऐसे आते हैं जो शादी के लिए जा रहे हैं, तो आप इसका एपिलेप्सी सर्जरी कर दो क्योंकि हमको शादी करनी है। तो मगर कुछ लोगों में डेफिनेटली वो जो सर्जरी पॉसिबल है तो आपको करवा लेनी चाहिए। तो वो एक बार आप ओपिनियन ले लेना चाहिए कि भैया ये मेरा जो पेशेंट है उसको सर्जरी पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर सर्जरी पॉसिबल है तो आप करवा लो फिर, क्योंकि 1-2 साल में उसकी दवाई भी बंद हो जाएगी, तो फिर आप अच्छे लड़के से आसानी से शादी कर सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन भी आप ढूंढ लो। सो आपको इतनी चीजों अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली शादी हो सकती है, नॉर्मल लोगों से भी हो सकती है, और आप अच्छा शादीशुदा जीवन भी बिता सकते हैं। सो वही मैं बताऊंगी कि आप बिना छुपाए अपने कॉन्फिडेंस से बताओ, नहीं है मुझे मिर्गी, फिर भी मैं नॉर्मल काम घर का कर सकती हूँ, नॉर्मल मैं कमा सकता हूँ, लड़का बोल सकता है। तो आप इसके बावजूद भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि आप अदरवाइज नॉर्मल है। ओनली जब आपको 2 मिनट का वो फिट आता है तभी आपको सिर्फ एब्नॉर्मलिटी होती है। सो वो कॉन्फिडेंस रखिए और आप ट्रस्ट के साथ
और इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर शादी होगी। थैंक यू वेरी मच, वही मुझे बताना था। हेलो। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। Thank you, Sangeeta, for थैंक यू। giving a brief outline on how people should go. I must tell you that पिछले 4 सालों में हमारे यहाँ पर कम से कम 25 लोगों की शादियां हुई है। हाँ, मैं वही बोला, एपिलेप्सी लोगों ने फाउंडेशन, एनजीओ सब declare ज्वाइन करके करो, लड़कों आपको को और उनके डेफिनेटली हेल्प सामने होगी। वालों को, कुछ लोगों ने आकर हमारे को भी मिले हैं, हमारे से डिस्कस किया है। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि जिसकी भी शादी होती है वो मिठाई और कार्ड लाकर यहाँ पर बांटता है और फाउंडेशन से कोई ना कोई उनकी वेडिंग में जाकर अटेंड करता है। तो ये एक ट्रेंड हमने रखा है। और पिछले लॉकडाउन में भी हमारे यहाँ पर कम से कम 3 या 4 जिनकी शादी हुई है उनको बच्चे हुए हैं। अभी तक कुछ 15 से 20 लोगों को बच्चे हुए हैं और सब नॉर्मल है। क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से हमारे यहाँ पर हर मरीज को फॉलिक एसिड रेगुलर फ्री हमारे यहाँ से दी जाती है। तो एपिलेप्टिक ड्रग हम 7 दिन की देंगे, लेकिन फॉलिक एसिड 1 महीने का देते हैं ताकि वो कंटिन्यू करें। तो फॉलिक एसिड डज हेल्प, इट इज टेस्टिमोनियल, बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन जिनके भी बच्चे पैदा हुए हैं सबके अच्छे हैं। आज तो मेरे को नहीं मालूम है यहाँ पर कोई है जिनका पिछले 1 साल में बच्चा हुआ है, नहीं, आज तो नहीं है, लेकिन है। हमारे यहाँ मीना की शादी पिछले साल हुई, वो भी आज यहाँ पर है। 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को? 1 साल हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग पिछले साल जो हुआ, वो हमारे यहाँ एक पेशेंट है जिसका पहली बार शादी हुआ और उन्होंने बताया नहीं था और उनका डिवोर्स हो गया। और उन्होंने इस बार बताकर एकदम क्लियर कट उसका रीमैरिज हुआ है और उन्होंने बताकर शादी किया, वो बहुत ही खुश है। हाँ, वही मैं बोलना चाहती हूँ, बताकर कीजिए प्लीज। हाँ, तो हमारे यहाँ एकदम क्लियर, आप समझ गए हैं ना, जिनका अभी शादी होने वाला है, कुछ लोग हैं यहाँ पर, शादी के बारे में सामने वालों को क्लियर, बहुत डिटेल में नहीं भी बताया, लेकिन बताना चाहिए कि हमारे को चक्कर आया था, उसकी हम दवा ले रहे हैं। और आपको कुछ भी डिस्कस करना है और जानकारी चाहिए तो डॉक्टर के पास जाकर आप डिस्कस कर सकते हैं और उनको आप हमारे पास लेकर आ सकते हैं, जैसे डॉक्टर रावत ने भी। ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि कई बार आप जल्दीबाजी में और अपना एक पेरेंट्स लोगों को लगता है मेरा एक काम पड़ गया, शादी कर दूं, मैं छूट जाऊंगा, उसमें कभी कभी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर अलबत्ता ऐसा होता है कि दवा ना मिलने से, मैडम ने जैसे बताया, छुप के लेते हैं या कई बार दवा नहीं मिलती है, कई बार घर से मंगाना पड़ता है, तो उसमें दवा मिस होने से शादी के अंदर जब नींद की मात्रा कमी हो जाती है तो उसमें फिट आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ऐसे केसेस में बाद में जब झगड़े और डिवोर्स और ये सब चालू होते हैं तो वो एक और परेशानी का कारण बन जाता है। फिर माँ बाप को ऐसा लगता है अच्छा होता हमने शादी नहीं किया होता, और लड़की को भी ऐसा लगने लगता है। तो एक मेंटल ट्रॉमा जो होता है उसको रोकने के लिए, हो सकता है आपके लिए जो लड़का बना है वो आपको मिलेगा, और जब मिलना है तभी मिलेगा, ये आप में विश्वास होना चाहिए। आप लड़की की शादी की जल्दी करने के बनिस्बत उसको पढ़ा लिखा कर, होनहार बनाकर जॉब के लायक करिए। जब वो अपनी खुद की देख रहा कर सकेगी, इतना पैसा कमा सकेगी, खुद को देखभाल कर सकेगी, जरूर उसको कोई लड़का मिलेगा। Am I correct, Sangeeta? Yes, that is what I said. You must educate them so that they can earn for their livelihood, or they can spend for their anti-epileptic medication. That is what I said then. Very, very correct. तो ये आपने जो स्वावलंबी बनो और खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि किसी के ऊपर भार बनने की आपका ना बने, तो आप जब खुद अपना कर पाएंगी तो आपको किसी और के ऊपर देखने की जरूरत ना पड़ेगी और किसी का गुलाम बनने की जरूरत ना पड़ेगी।
तो ये एक मैसेज जो मैडम ने दिया है, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है. थैंक यू सो मच संगीता. I look Yeah, forward to see thank you you. in Thank the you very evening much. at 6:30 and then tomorrow at 5 o'clock. You are a very busy lady and epilepsy is your keeping you busy for the whole day. So I'll see you also at Okay. 3:15 for the HOD meeting. So 3 o'clock, 6 o'clock, 6:30 and tomorrow. Yeah, I don't know, Nirmal, एक minute. I may not be able to come for that HOD meeting because Kakani sir might be coming to KEM, you know. Okay. Otherwise, I depute will your second in command. Okay. If you are not able to Okay. join. And Fine, give fine. him the I'll tell points which need to be taken forward. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Fine. तो आप लोग समझ गए ना सब कि शादी का जो है, समझ गए ना तुम? या मेगा टाइम है अभी तो? लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी, जिनके माँ बाप सोच रहे होंगे अब शादी कब करेंगे, कब फिट बंद हो जाए. तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि उसको अपने को, बच्चों को काबिल करना है. और इसीलिए मैं आप लोगों को दो चीजें बताई. एक मैंने आपको बोला यहाँ पर आकर अपने आप को और तेज बनाइए, और दूसरा मैंने बताया आपको कि हम ये जो कोर्सेज है जो चालू करना चाहते हैं, जिससे आपको एडवोकेसी और एपिलेप्सी केयर के जो सोशल वर्कर के सर्टिफिकेट है वो अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है. डॉक्टर प्रिंस कागजी फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो थोड़ी देर में हाजिर होंगे. तो हम तब तक जब तक वो आए हम आगे बढ़ते हैं. और यशोदा जो पूना से है, संवेदना फाउंडेशन से. यशोदा, आर यू देयर? Yes, yes, I'm here. Yeah, so we will request Yashoda to be here and say something to us. Yes, thank you so much, Dr. Nirmal Surya. And नमस्ते दोस्तों, हैप्पी पर्पल डे. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पर्पल डे सेलिब्रेट करने के लिए सब एपिलेप्सी दोस्त यहाँ जमे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी व्हाइल लिविंग विद एपिलेप्सी. सो इसका मतलब यह है कि जो समाज है, हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं, तो समाज को भी समझना चाहिए कि उनका कहना क्या है एपिलेप्सी के बारे में. दोस्तों, मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, क्योंकि अभी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं किया, पर मैं खुद ही बताती हूँ. मैं हमेशा ओपनली बताती हूँ कि मुझे खुद को एपिलेप्सी की बीमारी थी बचपन में, और अभी पिछले 18 साल हम पूना में संवेदना फाउंडेशन एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप चला रहे हैं. तो हम जब खुद वो बीमारी से जाते हैं, खुद एपिलेप्सी के में वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं, ये होगा तो क्या होगा, और हमारे मन में भी ऐसी डर रहती है, घर जाऊंगी और बाहर मिर्गी के दौरे आएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग क्या कहेंगे. तो कौन है ये लोग क्या है? तो ये बारे में मैं जब सोचती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि वैसे हम सब मिलके वो समाज है. वो समाज अलग है और हम अलग है, ऐसा नहीं है. तो हम सब मिलके वो समाज है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हम खुद को जैसे प्रेजेंट करते हैं वैसे लोग हमें ट्रीट करते हैं. हमें खुद को यदि बहुत ऐसा कम समझा कि हाँ मुझे वो बीमारी है, ऐसा है, तो लोग भी वैसे ही ट्रीट करेंगे. एंड ऑन द अदर हैंड, हम कॉन्फिडेंटली हमारे जो कुछ है वो खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे, तो समाज भी हमें वैसा ही ट्रीट करेगा. इसीलिए ये समाज जो शब्द है वो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम वो समाज का ही हिस्सा है. दोस्तों, यहाँ पुणे में हमारी संवेदना फाउंडेशन एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप है. हम पिछले 18 साल ये एक्टिविटी चला रहे हैं, और संवेदना में हम हमेशा बताते हैं कि जो एपिलेप्सी फ्रेंड्स हैं उनको हमेशा बताते हैं कि ओपन आउट, टॉक अबाउट योर एपिलेप्सी. सो हम जब ओपनली हमारे एपिलेप्सी के बारे में बताने लगते हैं, कॉन्फिडेंटली बताने लगते हैं, तो हमें भी अच्छा लगने लगता है.
और हमें भी पता चलता है कि सोसाइटी हम जब ओपनली अच्छी तरह से बताते हैं तो सोसाइटी भी अच्छी ही ट्रीट कर रही है। तो इसीलिए हम खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एनजीओ में हम जो कई एक्टिविटीज के बारे में मैं बताऊंगी। आज मैं यहाँ मैरिज और एपिलेप्सी के बारे में नहीं बात करूंगी, हमने उस बारे में अभी सुना है। इसीलिए मैं आपको दूसरे हमारे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जो ये मेरे टॉपिक को रिलेटेड है। तो हमारी एक्टिविटी क्या रहती है, तो वो है एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप मीटिंग। तो आप एपिलेप्सी फाउंडेशन में जो आते हैं उन सबको मालूम ही है कि सपोर्ट ग्रुप मीटिंग क्या रहती है और सपोर्ट ग्रुप मीटिंग का फायदा क्या रहता है, ये आप सबको मालूम है। हम सब जब एक नाव से जाने वाले लोग, ये एपिलेप्सी नाव के से जाने वाले लोग, हम जब हमेशा इकट्ठा आते हैं, हम जब साथ में डिस्कस करते हैं, हम जब शेयरिंग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं और हमें अच्छा लगने लगता है और हमारे मन में कॉन्फिडेंस आता है। और यदि हम हमारी कुछ गलती हो रही है तो वहाँ जो काउंसलर्स है, डॉक्टर्स है, वो भी हमेशा बताते हैं कि नहीं ये ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो इसीलिए सपोर्ट ग्रुप मीटिंग जो रहती है उससे हमें बहुत फायदा होता है खुद को प्रेजेंट करने के लिए। और एक चीज रहती है जो अभी मैंने कहा, वो है एपिलेप्सी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग क्या रहता है, ये आप तो सब एक्सपीरियंस करते ही है कि हमारी सोच में कुछ गलतफहमियां रहती है, कुछ हम दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। पर काउंसलिंग से हमें पता चलता है कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता अच्छा है और हमें क्या क्या करना चाहिए। इवन हम जो दवाइयाँ लेते हैं उसके बारे में भी हम काउंसलिंग लेते हैं, तो पता चलता है कि ये सब दवाइयाँ लेना कितना इम्पोर्टेंट है, वो टाइम पे लेना कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे घर में जो रिलेशंस है वो कितने इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें हमें पता चलता है। और इसीलिए काउंसलिंग तो बहुत यूजफुल रहता है। मैं और एक हमारे एक्टिविटी के बारे में यहाँ बताऊंगी जो ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है, और वो है अवेयरनेस प्रोग्राम। आप एपिलेप्सी फाउंडेशन से भी वो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, वैसे ही हम संवेदना फाउंडेशन से भी करते हैं। तो अवेयरनेस क्या होता है, ये यही जो मैं पहले से बता रही हूँ कि ओपनली हमारे एपिलेप्सी के बारे में बातें करना। पर वो जो मीडिया पे भी रहता है कि फेसबुक पे मैं हमेशा लिखती हूँ या ट्विटर पे लिखती हूँ। हम यहाँ पुणे में रिक्शा पे भी बैनर लगाते हैं एपिलेप्सी के बारे में मराठी में। तो वो पढ़ के भी बहुत लोग आते हैं और उनको पता चलता है कि अरे यहाँ भी एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ भी जाना चाहिए। तो ऐसा अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट रहता है। और एक एक्टिविटी है हमारी, वो है मेडिसिन हेल्प फॉर द नीडी पीपल विद एपिलेप्सी। कि जो लोग रहते हैं कि उनको मेडिसिन लेने का ये नहीं होता है, कि जो बहुत महंगी मेडिसिन रहती है और जिनको बहुत पॉवर्टी रहती है, गरीबी रहती है, तो वो लोगों के लिए हम मेडिसिन की हेल्प करते हैं। तो लास्ट 5 years 6 years वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी, और दैट्स ऑनगोइंग एक्टिविटी एंड करंटली वी आर हेल्पिंग 150 पेशेंट्स एवरी मंथ। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं, तो ये करने से हमें क्या मिलता है, तो एक चीज मिलती है हमेशा, वो है समाधान और आनंद। यदि दूसरों का दुख जानना और उसके लिए हेल्प करना, ये बहुत बड़ी चीज है जो डॉक्टर निर्मल सूर्या भी कर रहे हैं और आप सब लोग भी देख रहे हैं, वही हम कर रहे हैं कि दूसरों का दुख जानना और उनको हेल्प करना, यही चीज हम करते हैं। जिसमें हम मराठी में हमेशा वो फ्रेज यूज करते हैं कि लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे। सो ये हम करते हैं और उससे हमें बहुत बड़ा आनंद मिलता है। तो दोस्तों, आज अब ये ध्यान में रखना चाहिए कि समाज को ब्लेम नहीं करना चाहिए। समाज में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मिसकंसेप्शंस है, इसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें अवेयरनेस खुद से स्टार्ट करना चाहिए, खुद बातें करनी चाहिए, खुद फेसबुक पे लिखना चाहिए हमारे एपिलेप्सी के बारे में, नेबर्स से बात करना चाहिए, अच्छी तरह से बात करना चाहिए कि इनको ऐसे ऐसे मिर्गी के दौरे हैं, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, स्कूल में बताना चाहिए। और जब हम खुद से बात करना शुरू करेंगे, तब ये अवेयरनेस बहुत अच्छा होगा। तो मुझे आई एम श्योर कि आप सब लोग ऐसे ऑलरेडी करते होंगे, पर जो नहीं करते होंगे वो जरूर स्टार्ट कीजिए,
खुद के बारे में ओपनली बात करना. So thank you so much Dr. Nirmal Surya. Thank you Epilepsy Foundation for inviting me here. और आप सबको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या मैरिज ब्यूरो के बारे में, कौन से भी बारे में, तो एपिलेप्सी फाउंडेशन से जरूर मिलेगा. थैंक यू. यशोदा, हमने आपका ऑलरेडी पैनल सबसे शेयर कर दिया था, काफी लोगों ने कांटेक्ट भी किया होगा. यस, हो सकता है, और वो आपके टच में रहेंगे. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो थैंक यू सो मच. बताया. We move to Dr. Mrinali Palcheta from Uttejan Group to say a few words. Mrinali, are you there? Mrinali, are you there? So while Mrinali is joining, we have Prinko Karji from the Democratic Republic of Congo. So welcome, Prince, to Epilepsy Foundation India. I must say that Prince has been a very active, Dr. Prince is neurologist. He is active from Democratic Republic of Congo, and we have been in constantly touch with each other. I have been able to connect with him for sending the electrodes and EEG paste during the pandemic. Somehow or other we were able to connect somebody from the consulate to their community. So welcome, Prince, and may I request you to say a few words to our foundation for next few minutes. Prince. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Prof. Newman. I'm honored to be here, and it is I'm very happy to be with all of you, and it is for me a very good time to share together in Jersey. Thank you very much, Prof. Can you say a few words about your work and how you have associated with Epilepsy Foundation? Thank you very much. We are working in Jersey since now, since 2008. We started our foundation here in Jersey, and we have in Jersey we have 600,000 patients with epilepsy. That is the data we get from 2019. 2014, please. 2014, we have like 600,000 patients with epilepsy, but many challenges, many stigmatization, social discrimination in our country, and that is why we start with our ASLEC Epilepsy Foundation. In the beginning, it was only a foundation combating the stigmatization of epilepsy in Jersey, in the country. And then we met it with the Indian Epilepsy Foundation. We have a very good partnership. We get some help from there, like electrodes passed for our EEGs test that are very helpful for our patient. And we continue with our partnership. We are working together. That's why we are here. For to speak about Jersey, the work we are doing. Like yesterday, we had a very big campaign of awareness in schools. We meted 500 children in schools, 5,000 please, 5,000 children in schools, and we are a very big team to make awarenesses to combat the stigmatization of epilepsy, because the challenge are the same in all the countries in Africa. And our beginning with ASLEC, it was with a very bad situation that I'm going to share with you. Before to start, what we constated, it was on 2008.
one children in a big city of our country, the second one, a big city in our country, Bumbashi, to the south of the country. One children who are coming from the school. In the return back of this children, he gets a charger and in the way, and it was like he was with the friends. For them, like the stigmatization, for them the epilepsy is contagious. And when this child suddenly she fell down, she fell down of surgery. Her friends become frightened and fled the area. This is because the little children believe that when you touch a person with epilepsy, you under the person with the epilepsy under what can I say, under the surgery, if you touch him, you will get epilepsy, because epilepsy for them is contagious. That is the bad situation. According to the situation, we create a Aslake Epilepsy Foundation. We start to educate children about epilepsy, to train them about epilepsy, with many awarenesses, many webinar in TV and everywhere. We are going to give that one to help them so that they can have a very good idea of this disease. And it is very bad in many areas. For them, you can meet one teacher, because it is for Africa, in any areas, for them, epilepsy is always contagious. It is very, very sad here. And that is why for us, we are going to help persons to know that epilepsy is not contagious, because for them, epilepsy is like it is like a deep divine punishment. It is a bad like mental illness, and there is many idea like that. We are going to help. We are doing a very great work here to combat the stigmatization, because we have many patients that make the patient in depression. The patient with epilepsy in Jersey can't have a good work. Some of them, they can't be married. And we have many stigmatization like that, because the persons haven't a very good idea of the epilepsy. And that's why for that, our work, we are telling them epilepsy is not contagious. It is a neural disease, and it is treatable disease. And yesterday, we have a very big meeting with the Minister of Health, National Minister of Health, and I'll send you the video and some pictures. Yeah, like for yesterday, we are planning many things to increase the awareness on the stigmatization of epilepsy in the TV and everything. I think in any way, epilepsy is a very stigmatized disease. And to go very far to help our patient is not only to give the treatment, and then we need to help them to educate the parents, to educate the children in schools, in churches, and in doing like that, it will be very helpful for everyone who is suffering with epilepsy. And now we have like we done one study on 2016 on some schools of my area. We found that the students don't know that epilepsy is a neural disease, and for them it is a mental illness. It is like a demoniac possession. It is a bad luck, divine punishment, and for the student don't know that. And we found that 75% of students know that epilepsy is contagious.
And that is why for us, we need to make a very good work in this one to combat the stigmatization of epilepsy. And the challenge we have with that stigmatization, we don't get many patients to the hospitals. For them, you know that we must go to the pastor, we must go to the church, we must go some things like that, and the surgery are not under control. And with the ASLEC Epilepsy Foundation, we are taking care of 2,500 patients. We have a very good results now. Patients without surgery, some of them they are now returned back to school. Some of them they are get a small job, and we are working the awareness together. It's not only our doctors, nurses, but we are now a very big team with the patients too. They have the testimony, and they are telling that it is a treatable disease. If you get drugs, you'll have your surgery under control. And that is why for them, and the work with the work of ASLEC is a very big work. Is a very big work with the great results, and that is so helpful for our patient. Thank you very much. Thank you. So Dr. Prince Kar जी ने बताया कि अफ्रीका में एपिलेप्सी को एक कंटेजियस डिजीज माना जाता है. लोग ये समझते नहीं है कि ये दिमाग की ब्रेन की बीमारी है, और डॉक्टरों के पास आते नहीं हैं. तो वो लोग स्कूल, चर्च, वहाँ पर जाकर उन लोगों को सिखाते हैं. और उनके पास कल उन्होंने 5000 बच्चों का स्कूल अवेयरनेस कैंप किया, मिनिस्ट्री के साथ कैंप किया. थैंक यू वेरी मच. कीप गुड वर्क. We will keep on associating, and inshallah in future we will have a epilepsy model which we have created being followed in your country too. We hope for that in soon than later. Thank you very much. So thank you very much. Thank you for being here. So we continue, and Mrinali, yes, if you sir. are there, then yes, sir. I request you to quickly tell us about 5 minutes, because I need to close the program at 3 o'clock. Thanks to all the chief. Good afternoon to all the guest speakers, and thanks to Dr. Nirmal Surya and Epilepsy Foundation to give me this opportunity to speak on Purple Day. Ours is an Uttejan Epilepsy Support Group. We work under the aegis of IPH, that is Institute for Psychological Health, Dr. Anand Nadkarni, and he's a psychiatrist, Muri non-psychiatrist, and clinical psychologist, Dr. Shubha Tatte. They are founders and trustees. Apart from me, there are the 3 mothers who are as coordinators. Ms. Alpa Chand is special educator, Ashwini, Dr. Ashwini Marathi, developmental pediatrist, Ms. Rama Ramchandran, an educator, myself, I am a homeopath and general practitioner. So our children are also children with epilepsy, and we also undergo the same difficulties. हम भी, हमारे बच्चे भी epilepsy से ही पीड़ित हैं, और हम भी उसी कठिनाइयों से जाते हैं जिस कठिनाइयों से सब epilepsy के बाकी के बच्चे और उनके पालक जाते हैं. हमारे गोल्स है कि हमें कलंक जो है एपिलेप्सी के बारे में जो हम सब बात कर रहे हैं कि कलंक है, कि एपिलेप्सी को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं माना जाता, मगर कुछ अछूत बिछूत ऐसे कुछ कंडीशन मानी जाती, तो उसका कोई कलंक कम करना. फिर जानकारी देना एपिलेप्सी के बारे में. तो जानकारी में हमने स्कूल अवेयरनेस, स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स किए थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें हम सब जानकारी देते थे. फिर तकलीफें दूर करना एपिलेप्सी वालों के लिए और उनके माँ बाप के लिए सिखाना कि तकलीफें कैसे दूर करें और स्वीकार करके तकलीफें धीरे धीरे दूर हो सकेगी. चौथी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमें हमारे जो दवाइयाँ हम लेते हैं उन दवाइयों को हमें हमारे मित्र बनानी है. जब हम अपने दवाइयों को मित्र बनाएंगे तो हमें ये एक बड़ा सा कष्ट नहीं लगेगा कि हम दवाइयाँ रोज लेते हैं, दिन में 2 या 3 बार. तो ये जो हमारी एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ हैं, ये हमें सही तरीके से दिन के काम करने में सहकार्य करती हैं. और ये जरूरी है कि हम रोज रेगुलर हर टाइम के अनुसार रोज के नियम से हम दवाइयाँ लें. इसे हम R3 ट्रीटमेंट कहते हैं एपिलेप्सी के लिए. रोज नियमित टाइम से दवाइयाँ लें, रोज नियमित टाइम से खाना खाएं अच्छी तरीके से, रोज नियमित टाइम से 8 घंटे रात की नींद लें, और रोज नियमित से हम एक्सरसाइज करें, जैसे चलने के लिए जाए या योगा करें. और लास्ट जो है कि हम यही सब करके
हम एपिलेप्सी वाले लोगों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए, उनके परिवारों के लिए उनका स्ट्रेस कम करते हैं और इसी से हम एम्पावर करते थे। उत्तेजन इस शब्द का है कि एम्पावर करना, माने उसमें से हम बाहर आके उभर के खड़ा रहना। तो ये हमारा पर्पस है। अभी हम पर्पल डे से आज मिले हैं, तो सभी को पर्पल डे की बहुत शुभकामनाएं। कैसिडी मेगन ने पर्पल डे शुरू किया था क्योंकि वो चाहती थी कि जिनको एपिलेप्सी है वो अकेले ना रहे। मगर कभी कभी अकेला रहना अच्छी बात है, क्योंकि हम खुद से बात करते हैं और खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, अंदर झांकते हैं खुद के अंदर। तो ये हमारे एपिलेप्सी के बच्चों को सभी को अकेलापन हमेशा महसूस होता है। मैं कभी कभी थोड़ा कम, कब ज्यादा, मगर एपिलेप्सी वाले जो पीड़ित है और उनके जो माता पिता है, परिवार के लोग हैं, उनको अकेलापन कभी कभी जरा ज्यादा महसूस होता है, स्पेशली जो एपिलेप्सी पे पीड़ित है। तो इसीलिए हमें ये सब अवेयरनेस और ये सब स्टिग्मा सब कम करना है कि अब एपिलेप्सी हम इसीलिए मैंने ये विषय लिया कि लोनलीनेस और आइसोलेशन जो एपिलेप्सी के कारण हो जाता है वो कैसे हम दूर करें। तो इसके लिए मेरे पास कुछ नुस्खे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे पहला है, 11 नुस्खे हैं, अगर टाइम परमिट करता है तो बात करेंगे। पहला नुस्खा है कि हम छोटी छोटी बातें शुरू करें। ऐसे होता है कि जब हम एपिलेप्सी हमें शुरू हो जाती है तो हम खुद से सिकुड़ जाते हैं, हम अपने आप में घर में रहने लेते हैं, इस डर वजह से कि हमें बाहर जाएंगे, किसी और से बात करेंगे तो बाहर जाके हमें मिर्गी ना आ जाए, तो उससे हम घर में ही रहना पसंद करते। ये ना करके हम छोटी छोटी बातें शुरू करें, जैसे कि किसी फ्रेंड को टेक्स्ट मैसेज भेजे, या अगर हम बाहर बाजार में चले गए तो उस आदमी से, शॉपिंग मॉल में वगैरह गए तो वहां पे जो काम करते हैं उनसे पूछ ले कि आपको कैसा है, आपका दिन कैसा जाता है। ये एक नुस्खा। दूसरा है कि हम हैंग आउट करें लाइक माइंडेड पीपल से। लाइक माइंडेड जो अपने जैसे हैं, जो अपने तरीके से सोचते हैं। जैसे आज हम सब लाइक माइंडेड लोग हैं, मिले हैं, जो हम सब एपिलेप्सी के बारे में जानते हैं और एपिलेप्सी के बारे में हम आगे और जानकारी देना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर मिल पाए, किसी क्लब में ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स क्लब में या वीडियो गेम्स या बुक्स म्यूजिक क्लब में ज्वाइन करें, तो हम वहां पे लोगों को मिलेंगे और मिलने से हमारा अकेलापन थोड़ा कम है। दूसरा, हम एक्टिव रहे माने हम एक्सरसाइज नियमित तरीके से करें। इससे क्या होता है, एक तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, दूसरा हमें कम स्ट्रेस लगेगा। कम स्ट्रेस, जैसे हम चलने जाएं या भागने जाएं, चलने जाएंगे भागने जाएंगे तो हमें लोग मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, हमारा अकेलापन कम हो जाएगा। फिर तीसरी है कि हम चौथा है हम जंप ऑनलाइन माने जैसे अभी हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। अभी कोविड की वजह से 2 साल से तो हम एक दूसरे से कम मिल पा रहे थे, लोगों से कम मिल, तो ये हम कभी हम चैट कर सकते हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे, या फिर जैसे अभी आज हम मिल रहे हैं ऑनलाइन बैठ के बात कर सकते हैं। जैसे अलग फोरम, जैसे आज ये बड़ा सा इवेंट है, बड़ा सा फोरम है, तो ऐसे हम बैठ के हम अलग अलग फोरम्स में हम ज्वाइन करके हम अपना अकेलापन दूर करता है। फिर 5वां है कि हमें यस कहना है। जब भी हम ये अकेलेपन में या आइसोलेशन में इस गिरफ्त में हम आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई संधि आती है कि हम उस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए उठ के खड़ा होना है और कूदना है, जैसे कि कूदना है और कहना है नहीं मैं ये करूंगा। मैं जैसे आज अभी हमारे यहाँ पे काफी अटेंडेंस है, 50 लोगों के ऊपर से अटेंडेंस है, 100 ऊपर, और इंटरनेशनली है तो और भी लोग रहे हैं। तो ऐसे होगा कि हम ऐसे मीटिंग में क्यों नहीं जा रहे, तो हमें ऐसी मीटिंग में, ऐसे फोरम में हमें जाना चाहिए। बैक योरसेल्फ टू फ्लाई सोलो। कभी ऐसा होता है कि हमें हमेशा कोई साथ मिलेगा नहीं मिलेगा अकेलापन दूर करने के, बात करने के लिए, मगर कभी अगर हम अकेले ही कहीं चलने जाएं या अकेले बैठ के सोचे, बात करें, किसी बीच साइड पे चले जाएं, किसी बागीचे में जाके बैठे और खुद से बात करें अपने मन में। हम मुंह खोल के नहीं बात करें, मगर हम अपने विचारों से बात कर सकते हैं खुद से, और हम अपने अकेलापन दूर कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि अगर हम कभी अकेले रहते हैं तो हम खुद में झांकते हैं, खुद की तकलीफें जानने की कोशिश करते हैं, तो ये अकेलापन हम खुद अपने आप भी कम कर सकते हैं। तो सिट विद द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस। कभी ऐसे होता है कि हमें जब हम बैठते हैं सभी साथ में या कभी अकेले भी हो, तो हम बैठ के उस अकेलेपन को भी स्वीकार करना चाहिए।
हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। कभी कभी खुद का, जैसे हम एपिलेप्सी है ये हम स्वीकार करते हैं, वैसे अकेलेपन को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला क्यों हूँ, उसकी वजह पूछना चाहिए कि मैं किसी और से बात करूँ, किसी फ्रेंड से बात करूँ। राइट इट डाउन। ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है। हमें जब अकेलापन लगता है तो बड़े बड़े लेखक कवि क्या करते हैं, अपने विचार वो भी कभी कहीं कहते हैं कि अकेले जाके कहीं पे बैठते और लिखते। तो हम भी अगर अकेले हैं तो अपने मन के विचार हम लिखेंगे, और उसके बारे में एक बाजू जब लिखते जाते हैं तो हम सोचते जाते हैं। सोचेंगे तो हमें अपने आप ही उसके ऊपर अलग अलग नुस्खे और अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग जानकारी मिलेगी कि हमें ये कैसे इसे दूर करना है। लिखने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर किसी और है कि हम अगर कोई और नहीं मिलता तो कहते हैं कि पेट्स अच्छे होते हैं, नॉन ह्यूमंस। हम लोगों से जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मतलब कभी कभी पेट्स या फिर कुत्ते बिल्लियां, इनसे भी अगर हम ये करें तो अच्छा। मगर हमेशा हम पेट घर में नहीं ले आ सकते, तो कभी ऐसे कर सकते हैं कि हम बगीचे में कोई है, कोई किसी पेट गार्डन है, डॉग पार्क है या कैट पार्क है, वहां जाके वहां के वो जो पेट्स है, वहां के जो कुत्ते बिल्लियां या रास्ते या आई एम जस्ट फिनिश सर, जस्ट फिनिश। तो उन कुत्ते बिल्लियों से भी अगर हम बात भी करें तो हमारा मन हल्का हो जाता है। लास्ट हम खुद वॉलंटियर करें, जैसे अभी ये संस्था है, ऐसे काफी एनजीओ है हर जगह पे, तो हम वहाँ पे वॉलंटरी काम करेंगे तो हमारा मन बहल जाएगा। और लास्ट सपोर्ट ग्रुप है जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि एक दूसरे को हम सपोर्ट, जैसे आज डॉक्टर निर्मल सिंह ने बड़ा सा एक प्रोग्राम किया है, वैसे अलग अलग सपोर्ट ग्रुप अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना अकेलापन, आइसोलेशन दूर कर सकते हैं और हमें फिर कभी लगेगा नहीं। So thanks Dr. Nirmal Surya for giving me the opportunity. Thank you, Mrinalini, and it was a because pleasure to talk to you. Thanks so much. I have to finish another meeting start at 3 o'clock. I can so, understand. And Tori is here. No, so, I finished it, sir. I finished it. What was required. I thank you very much, and we thanks. look forward to coordination. And one day we are going to invite you at our center to talk. Thank you, sir. To all our patients here. Oh, good Lord. Okay, sure. Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Good day to everyone. Thank you. So we have now Tori Robinson. She has joined from London. कुछ लोगों को आपको मालूम होगा, टोरी जब यहाँ पर आई थी कुछ सालों पहले, शायद कुछ आप में से कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे, और जो लोग यहाँ पे याद है उनको, आपने देखा होगा कि वो बहुत ही बड़ी एक्टिविस्ट है, आजकल एपिलेप्सी अवेयरनेस में काफी काम कर रही हैं। So I welcome you, Tori. Are you there? I am here, yes. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you very much, and welcome to Epilepsy Foundation. Well, thank you for having me again, because obviously I was actually in Mumbai before lockdown, so I got to meet a lovely number of all of you, and I'll never forget that, and I hope that I can come back at some point. That would be lovely. For those I haven't met, my name is Tori Robinson, and I'm a person with epilepsy. I've had epilepsy since I was a child, and I've also had a temporal lobe resection or epilepsy surgery where they took part of my brain away as treatment for my epilepsy. I still have epilepsy and I still take medication, but things are a lot better now, which is brilliant. Today, I want to talk about how to speak with confidence when it comes to your epilepsy. Excuse me. So I've always been really confident talking about my epilepsy because the epilepsy is not me. The epilepsy is a disease that is separate from me. It forms a huge part of my life, yes, but just as if I had asthma, the asthma would not be me. If I had a missing leg, the missing leg would not define who I was. Now, because I've always loved the sciences, I love neurology and neuroscience and anything to where you look to research about epilepsy. And I would highly recommend, if you have epilepsy or if you know somebody with epilepsy, then to learn as much as you can about it. Because the more you learn, the more exciting it becomes. And the more confident you become talking about the epilepsy, because then you realize the epilepsies affect
so many people in the world. They affect people from every country in the world. And they, yes, affect us very differently, depending upon culture, depending upon the type of epilepsy we have, because there are more than 60 different types of seizure. Some of us have genetic epilepsy, some of us don't. But what I find is that we have so much in common, so much. And a lot of the stuff that we have in common is not actually the epilepsy. Once we move past the epilepsy, we'll find things like, oh, we have a similar type of humor, or we both have an interest in learning about medicine, or we both like the same actor in Hollywood or Bollywood, or, you know, things like that. And that's really important it's important to find out things about yourself that are not to do with epilepsy. Now, I'll give you a great example of somebody I know who is like this. One of my friends, he has epileptic seizures that cannot be controlled. Like me, he's had brain surgery for his epilepsy. He's also had a VNS implantation in his chest, which connects with his brain. He takes anti-seizure medications, and he still has seizures, which is very unfortunate. But guess what? He's a funny man. He studies neuroscience at university. So many things. There are so many things that he does that are not to do with his epilepsy. But then I'll give you another example of how you become confident. I know somebody else with epilepsy who has learning difficulties. She has controlled seizures, which is fantastic, but she's not great at communicating. She finds it difficult to understand things that other people, for instance, if you've been to school or been to university or whatever, she can't understand those things because of her learning difficulties. But she still doesn't let her epilepsy define her, because despite her learning difficulties, she learns about epilepsy. And she realizes she's not the only person having seizures. She's not the only person who takes these medications. And she and I are very different, but we met because of the epilepsy. And then we talk about things that are not to do with epilepsy, because the epilepsy gets a bit boring sometimes. She has lots of other things in her life which are not about the epilepsy. Now, I know that things can be very challenging in different countries and different cultures and different families. Now, I want to let you know that somebody in my family was so ashamed of me because of my epilepsy. And this person did not believe I had epilepsy until I was 31, 32. Because, oh, my daughter, she cannot have epilepsy because that's a bad thing. And if she has epilepsy, I need to be ashamed of her. And now I understand that people in other countries experience this as well. But what has always helped me, and it's not been easy, don't get me wrong, but what has always helped me is to be confident and to talk about epilepsy, is learning what causes epilepsy and learning about what research is happening to learn more about epilepsy, and also learning about the other things in addition to epilepsy. So for instance, my mental health can be very up and down. And I know that lots of people here will understand that as well. And for me, my mental health and looking after my mental health is more important than, or more impactful than the epilepsy. And lots of people don't realize that. But it's not wrong. It's just that you have to prioritize things in your life that are most important for you. Now, I've got a quick story for you guys. So after I had surgery in 2013, I was getting extra frustrated with people because I didn't realize how ignorant other people were about epilepsy, because I would just talk about it confidently. So I decided to set up an organization called Epilepsy Sparks to educate people about epilepsy in a cool way, in a positive way.
Now, what's happened over lockdown, I use this as an opportunity to reach out to people from around the world. And by people, I mean doctors, neurologists, scientists, neurophysiologists that do our EEGs, to people who look at different parts of dead bodies, people who might have died from epilepsy, to find out more about it. And I'm just going to share some screenshots with you, okay? So I want you to understand how excited I am about this. I started a podcast and a video series about epilepsy and what can come with it and the research, so that we can realize the positive side of what's happening behind the scenes for us. Because often we have a bad memory, I do, and I forget about the good stuff. So I want everyone to see what the work is being done for us. So let me just share my screen. So can everybody see my screen okay? Yes, ma'am. Yeah, Yes, epilepsy please. sparks. Okay, wonderful, wonderful. All right. So I set up this website of my own in my name. And then recently, so it has a bit about me, and it has Epilepsy Sparks Insights, which is the blog, and which is the podcast and the video series. And on here, I have the links to the interviews that I'm doing with this gentleman. Is from Ukraine. He's a doctor. He's a neurologist and psychiatrist. This is a neurologist from the States, from the United States, who helps older people with epilepsy. This is a neuropathologist, this lady from the Netherlands, and she looks at pieces of dead body, dead brain, and does research on it to help us who are living. These are people from Denmark who are doing genetic epilepsy research, and there's more and more here. So please feel free to have a look at these. If you click on them, you can see that I explain a bit about the person, and then more detail, and how you can help and how you can contact that person. And there's the video and there's the podcast all in one place, so that it's not too complicated for us to find everything. Another thing although you can, if you want, you can go to my YouTube page, which is here, and see all the same stuff. And then also there's the podcast, and so you can see it all separately. And then what I've also done is with my company, Epilepsy Sparks, for us, I've created a glossary so that people can understand what the funny words that doctors use actually mean. For instance, if they say adherence or compliance, we're like, what do you mean, adherence to what? And they'll be talking about taking our drugs as we have been instructed to. And then here, and I say it wrong, alleles, it's a part of a gene. So if you have genetic epilepsy or know somebody with it, this can be really interesting. Types of EEGs, different parts of your brain are all listed here in alphabetical order. So you can go back to this and understand what your doctor's saying. And the more you understand, the more confident you feel. And the more confident you feel, the better you are equipped to talk about your epilepsy to other people, your family, to employers, and to the public. And then also, this is particularly relevant, I've done a calendar so that we can have things to talk about when it comes to epilepsy. For instance, Purple Day. I've included things like World Autism Acceptance Week, because lots of people with autism have epilepsy, and lots of people with epilepsy have autism. Then we have a day to celebrate doctors and nurses, and it's led by, it's laid out rather with by month, so that you can just go through this and understand what's happening. I've included things like Stress Awareness Month. A lot of us get really stressed because of our epilepsy and because of the drugs we take, or because of the reaction of people. And then, for instance, I've included National Siblings Day, because lots of families are affected by the epilepsies too. So it's about looking at things from all different perspectives and getting excited about the research. I'm not always happy. I have depression, I have emotional disorder, and I have to see counsellors because of that.
I don't want to lie to you guys. It's not easy for me every day, but what helps me immensely is learning more and more about epilepsy and more about the things that often come with it. So like the mental health issues, like the autism, all these different types of things, cerebral palsy, etc. And learning about how it impacts other people, because it doesn't only impact us, it impacts our families. And sometimes, yeah, people get scared, but why do they get scared if we have a seizure? Because they don't understand. So if somebody in front of me, they get, oh my God, you have epilepsy. Yeah, it's really interesting, actually. So you can ask me any question you want. And then they're like, really? Yeah, I don't mind talking about it. That's been my experience, but I have had crazy people say to me, all you need to do is put a spoon in your pocket and that will cure your epilepsy. I said, no, that's not correct. And I laughed because it was so silly, but I know these things, this happened in England. It doesn't happen much here, but it does happen. And it's just crazy. So my key messages here are learn as much as you can about epilepsy. You can use I can send you these links to my websites if you want, if that helps you. And listen to things again, because they're really interesting. And I understand you guys might forget. I forget everything. And share it with anybody who's interested and make people realize that even if you don't have epilepsy, epilepsy affects you, because you might see somebody having a seizure. You know, somebody in your family could develop epilepsy when they're 30 or 40 or 70. So epilepsy affects everybody. Now I'll be here for about another 30 minutes. So if anybody has any questions, I don't mind, they can put those forward, or you can email me via the Epilepsy Sparks website with questions about what I do and things like that. And if I can answer it, I will. Thank you very much for listening. Thank you so much, Tori, for narrating your story. Thank you so much, Tori, for taking out time on the World Purple Day for raising the awareness regarding the epilepsy. Our patients have heard your story, and they will be finding definite motivation in fighting against this illness that is not just physical, but also so much of social and mental stigma. Thank you so much, Tori. Thank you very much for the invitation and for having me. Thank you. Bye-bye. लास्ट 5-10 मिनट है, मैं समझ रहा हूँ आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हो, 5-10 मिनट बैठ जाओ।
Hello. 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 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर रहे हैं। फर्स्ट पेंटिंग का प्राइस है, फर्स्ट प्राइस है केदार जाधव। चलो तालियां बजाओ यार। बाकी जिन जिन के नाम लेता हूँ सब आगे आ जाएंगे। ये किसका है पेंटिंग? नाम नहीं लिखा है। साहिल खान। साहिल खान। उम्मी मंडल। कार्तिक पवार। अनामिका गुप्ता। बहुत प्यारा पेंटिंग बनाया इसने भी। सबको देखा बेटा। Hello. तालियां बजाओ यार। Hello. Hello. Sir, we can't see you. Hello. अफसाना। जेबा। जेबा। वज्रेश्वरी। साउथ खान। श्रावणी। शुभम चौरसिया। औरम दोषी। जानवी। ओम चौधरी। मेघा शेख। मेघा बेटा। अरुणिशा। अंश। क्या बनाए? हाउसी के विनर्स बता रहे हैं अभी। सबकी रखो जरा, थोड़ा रुक जाओ। थर्ड लाइन ध्रुविशा। ध्रुविशा। अंश केलुस्कर। आजाद। हरीश दमवानी। हरीश।
मीना विनर ऑफ हाउस वीक अनामिका गुप्ता, तालियां बजाओ। हो गया फोरम जोशी, सॉरी मैं सबसे फर्स्ट में हूँ। चलो तालियां अगेन फॉर ऑल द विनर्स। हो गया ना अभी क्या है ना, इनका 5,000 का डाइट का चेक करें। आप लोग में से जो यहाँ पे सालों से आ रहे हो, जोशी जी को जानते ही हो, अपने यहाँ वॉलंटियर वर्क करते हैं, है ना। अपने यहाँ जो काफी सारे वॉलंटियर्स हैं, उनके फैमिली में या वो खुद एपिलेप्सी के पेशेंट है ना। तो बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द पेशेंट विद एपिलेप्सी, वो चैरिटेबल वर्क करते हैं। जोशी जी ऐसे पर्सन है कि नहीं जिनको एपिलेप्सी है, नहीं इनके फैमिली में किसी को एपिलेप्सी है, तो एक निस्वार्थ भाव से जो सेवा करना बोलते हैं, वो जोशी जी अपने कर रहे हैं। सालों से कैंप्स में आते हैं, एपिलेप्सी ओपीडी में आते हैं। और आज जोशी जी ने 2500 रुपए का चेक एपिलेप्सी फाउंडेशन के नाम पे दिया है। इससे और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखो, कोई तन से सेवा कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है। तो किसी भी फॉर्म में हम एपिलेप्सी के कॉज के लिए लोगों को हेल्प कर सके और इस वर्ल्ड को एपिलेप्सी फ्री बना सके, उसके लिए हम सबको जितना एफर्ट डाल सके उतना डालना चाहिए। थैंक यू जोशी जी। अगेन जोशी जी सबको चॉकलेट्स बांट रहे हैं। और आज बिफोर वी वाइंड अप वी हैड अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून। पर्पल डे जैसे अपने सबको पता है, आज सुबह से कुछ ना कुछ इवेंट चल रहा है। सेल्फी निकल है, इसको फोटो निकल यहाँ पे पीछे खड़े काफी टाइम हमको ऐसा लगता है कि एक आदमी से क्या होगा, एक पर्सन क्या कर सकता है। तो एक 8 साल की कनाडा की लड़की कैसिडी मेगन, जो एपिलेप्सी की पेशेंट थी, उसने जो 2008 में इनिशिएटिव लिया, उससे आज पूरे वर्ल्ड में एपिलेप्सी के खिलाफ नॉलेज में लड़ने में, जो उसके खिलाफ मेंटल सोशल स्टिग्मेटा है उसके खिलाफ लड़ने में और लोगों को साथ में लाने में उसने जो मूवमेंट इनिशिएट किया था, उसने आज काफी करोड़ों लोगों को पूरे वर्ल्ड में जोड़ दिया है। तो उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि एक आदमी भी अगर कुछ ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। We had a beautiful afternoon. We had bunch of guest speakers who have spoken so much about increasing our awareness regarding the epilepsy. They have narrated their own stories, and as we conclude, we would like to thank our sir, abhi hai nahi, but our beloved sir Surya sir, who is not here, who has gone to attend a second meeting. Our Dr. Professor Sophia, Professor Gus Becker, Professor Dr. Gagandeep Singh, Professor Vengama ma'am, Sangeeta Rawat ma'am, Prince Kasdi sir, Yasoda ma'am, Runalini ma'am, Tori Robinson. We would like to thank every one of them. And as we conclude, we will recite our national anthem and we will say goodbye to everyone. Thank you so much. चलो all please stand up. आराम से बच्चे, आराम से। नेशनल एंथम के बाद सब गरम गरम कचौड़ी और समोसा जो राहुल ने अरेंज किया है वो करके जाना। और नाश्ता करने के बाद हम सबको जाना है बैंड्रा वर्ली सीलिंग पे, जिसको पर्पल कर रहे हैं। 26 से 28 तक वो पर्पल रहेगा। सबको उधर जाके सेल्फी फोटो डाल के अपने सोशल मीडिया पे एपिलेप्सी की अवेयरनेस को बढ़ाना है। ओके, नेशनल एंथम, एवरीवन प्लीज स्टैंड अप। जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात
उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बैठ जाइए, सबको मीटिंग एंड कर देते हैं डिजिटल टीम।